Dear students, in this module I will introduce about nanotechnology and medicine. Nanotechnology in medicine is a new field with many possible uses, medicine being one of them, which will be called nanomedicine. Nanotechnology, the manufacturing technology of 21st century. तो ये नैनो टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई? ये न्यू फील्ड है और 21st सेंचुरी में शुरू हुई है. द स्टडी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डिवाइसेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस इन द रेंज ऑफ नैनोमीटर्स आर 1 बिलियन ऑफ अ मीटर. ये पहले जो है ना, इसको नैनो टेक्नोलॉजी को मेडिसिन में यूज़ नहीं किया जाता था, क्योंकि ये पहले भी वैसे भी न्यू फील्ड है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहे हैं और इस पे रिसर्च कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर बेस्ड ऑन टॉप डाउन टेक्नोलॉजी. सबसे पहले स्टार्ट में लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी को मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में और दूसरे डिवाइसेस में इस्तेमाल करना शुरू किया. दे टेक लार्जर ऑब्जेक्ट्स एंड मेक देम स्मॉलर. क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लैपटॉप्स होते थे, उनके नैनो चिप्स बना के, नैनो जो है ना ऑब्जेक्ट्स बना के उनमें डाल के उन्होंने इस चीज़ को आसान कर दिया, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटों में कन्वर्ट कर दिया. Most products of living organisms are constructed by tiny molecular machines such as cells and organelles working from the bottom up. तो इसमें उन्होंने जो है, अगर बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें, ऑर्गेनिज्म, सेल की बात करें, तो उन्होंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, छोटी छोटी मेडिसिन, छोटे छोटे इमेजिंग ऑब्जेक्ट्स बना के सेल्स के अंदर, ऑर्गेनेलीज के अंदर डाल दिए और फिर उनको चेक किया, उनकी वर्किंग कंडीशन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स. By organizing individual atoms and molecules into particular configuration, these molecular machines are able to create works of astonishing complexity and size, such as the human being. जब उन्होंने ये काम शुरू करना स्टार्ट किया तो उन्हें हैरान कुन जो है रिजल्ट्स मिले कि जो है ना, इतना छोटे साइज से वो बहुत जो कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म थे उनको भी उन्होंने सॉल्व कर लिया. Nature shows that the molecules can serve as a machine because living things work by means of such machinery. Enzymes are molecular machines that make, break and rearrange the bonds holding other molecules together. साइंसदानों को, रिसर्चर्स को ये पता था कि ये मेन रोल जो मैकेनिज़्म है मॉलिक्यूलर मशीन्स का, ये एंजाइम्स करते हैं. वो बनाते भी हैं, तोड़ते भी हैं, रीअरेंजमेंट भी करते हैं. तो उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को इन एंजाइम्स के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और उनके फंक्शंस देखना शुरू कर दिए. द मसल्स आर ड्राइवन बाय मॉलिक्यूलर मशीन्स दैट हाउ फाइबर्स पास्ड ऑन वन अनदर. तो इससे उन्होंने ये भी चेक किया कि जो है वो नैनो पार्टिकल्स एक मसल से दूसरे मसल में, एक आर्गन से दूसरे आर्गन में, एक सेल से दूसरे सेल में जो ड्राइव किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं. जैसा कि हमें पता है, डीएनए सर्व एज अ डाटा स्टोरेज सिस्टम ट्रांसमिटिंग डिजिटल इंस्ट्रक्शंस टू मॉलिक्यूलर मशीन्स, द राइबोसोम्स दैट मैन्युफैक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो साइंसदानों ने इस नैनो टेक्नोलॉजी को डीएनए के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सारी इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है, वो यहाँ से होती है, स्टोर भी इसमें होती है. एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी इसी से जाती है, एक आर्गन से दूसरे आर्गन में भी इसी से जा रही है. ये प्रोटीन्स भी जो है ना, इसी से फाइनल प्रोडक्ट होती है. तो उन्होंने इनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया. Using special bacterium-sized assembler devices, nanotechnology would permit on a programmable basis exact control of molecular structure. तो उन्होंने इन नैनो जो है ना डिवाइसेस बनाने शुरू कर दिए जो कि एग्जैक्टली सेम थे, कोई राइबोसोम्स की तरह के, डीएनए की तरह के, प्रोटीन्स की तरह के, उस तरह को, ताकि जो है ना वो इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकें और चेक कर सकें कि ये कितना जो है ना बेनिफिशियल है.
that are not readily manipulated by natural molecular machines and molecular techniques presently available. तो उन्होंने उसी जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है, मशीन मौजूद है, उस तरह के बना के उन्होंने टेस्ट स्टार्ट कर दिए. With nanotechnology, atoms will be specifically placed and connected all at very rapid rates. तो हमें जो है ना, उन्होंने देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसके जो एटम्स हैं वो बहुत जल्दी फंक्शन करते हैं, उससे जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे थे उनको, इन अ फैशन सिमिलर टू प्रोसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिस तरह एग्जैक्टली प्रोसेस होता था लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो न्यू ऑब्जेक्ट्स या मिमिक्स उनके बना के वो उनमें प्रोसेस करवा के चेक कर रहे थे कि जो है ना क्या रिजल्ट्स आते हैं और उससे डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए, दूसरे काम किए जाएं. थैंक यू. What is nanotechnology and why should you care? Before we get too technical, try this. Pick up something that's close to you. Anything. It might be a glass or a smartphone or even a t-shirt. It doesn't really matter what. Now, think about what this thing does well. It could be holding water or chasing Pokemon, or if you're thinking about that t-shirt making you feel awesome. Then think about what it doesn't do so well, perhaps smashing when you drop it or running out of power just when you need it. Or thinking about that t-shirt still, smelling of BO after you've worn it for a couple of days. It might not be obvious, but all of these things, the good stuff and the bad, depend on the individual atoms that make up the things around us and, importantly, how they're put together. It's a bit like a car working because of how all the individual bits are arranged. It's not just a case of having 4 wheels, an engine and a steering wheel. They all have to be in the right place if you want a car that gets you to where you're going without falling apart. Of course, atoms are a bit smaller than the wheels on a car, but the same idea holds. How the different atoms in something are arranged can affect things like how strong or how weak it is, or if it conducts electricity, or if you can see through it, or even what it feels like. In fact, pretty much anything that the stuff around you does, it does because of how all the different atoms it's made of are put together. And this includes the things that you don't want stuff to do, like breaking, or smelling, or running out of power. If we were really smart, of course, we'd make the stuff around us work better simply by doing a better job of arranging the different atoms it's made of. And if we were smarter still, we could make totally new stuff by putting atoms together in ways that we'd never done before. We could even start to create stuff that behaves in quite unusual ways, because when you start playing around with atoms, you can tap into some really weird quantum physics. The trouble is, atoms are really small, more than 1,000,000 times smaller than the tip of your pinky finger, and that means they're not that easy to work with. But over the past few years, scientists and engineers have become increasingly good at designing and engineering materials down at the level of atoms or small groups of atoms. And because this new technology involves doing stuff at such a minute scale, it's called nanotechnology. Using their new skills, nanotechnologists are beginning to do cool stuff like creating materials that are really good at turning sunlight into energy, or using nanoscopically small particles to deliver anti-cancer drugs, or even turning polluted water into drinkable water. They're even finding new ways to make glass that doesn't break when you drop it, batteries that last longer, and even t-shirts that smell fresh after you've worn them for a few days. This is really powerful tech. It's helping us to do stuff we couldn't even dream of just a few years ago. But because nanotechnology is so powerful, we need to be really careful how we use it, just in case we end up causing more problems than we solve. The last thing we want is to make better solar cells that also destroy the environment, or design more efficient water filters that just happen to cause more pollution.
Because of this, scientists and others are working hard to make sure we develop and use nanotechnology responsibly. But this isn't just down to nanotechnologists. It's something everyone can be part of, because at the end of the day, it's up to us to decide just how much we want nanotechnology-enabled products and what we're willing to put up with to get them.